Hello, welcome to the series of lectures physics. Last class we discussed about electric potential energy. We learned the concept of when the conservative force is present in the system and the conservative force is doing some work, how it is related with the potential energy, and we concluded that in the case of the conservative force, if only conservative force are present in the system and it is doing some work, the negative of the work done by the conservative force, negative of the work done by the conservative force, like is change in potential energy, negative of the work done, right? So now we have to discuss a new quantity, actually that is known as electric potential. We talked about electric potential energy, that is the change in electric potential energy, and this is the work done by the electrostatic field. But now we have to discuss a separate quantity, a new physical quantity, that is known as particularly electric potential. So how do we define the electric potential? Let us first consider that thing. So before moving to, if we see change in potential energy per unit charge, that is V delta U by Q, and what we should write from here, negative of the work done by Q. Here that this particular quantity is known as electric potential, or we must denote it this also by delta. Means change in electric potential, this is V is denoted by potential and delta denotes the electric potential, and this is the work done, and this is the change in potential energy and work done. So we define what we did, first of all we define the work done by the electrostatic field. So at any point, suppose a charge is present here, Q. So this Q is spreading its effect in near space, in the near region of space. अगर इस चार्ज Q की मैं बात करूं तो यह चार्ज Q अपने आसपास कुछ न कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उस प्रोड्यूस को, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज करते हैं कि यहां से एक Q0 चार्ज की बात करते हैं जो कि यहां पे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस पॉइंट पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे E, उसी तरीके से हम एक न्यू क्वांटिटी की बात करेंगे V, और जिसका नाम देंगे पोटेंशियल। Same thing. To realize the effect, to characterize the electric field, right? So what we should write, to characterize the electric field, we define another quantity which is known as electric potential. Mathematically,
electric potential is defined as electric potential energy per unit चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे यदि मैं बात करूं कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U और किसके रेस्पेक्ट में, इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में, यहां पे अगर ये U है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी V जो यहां पे हम लोगों ने क्वांटिटी रखा है V को कैसे डिफाइन करेंगे, U बाई क्यू नॉट। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसी पॉइंट पे ए क्वांटिटी, एट दिस पॉइंट वी हैड डिफाइंड ए क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड that was the characteristics of the charged particles. In the same way, we are now in position to define a new physical quantity that is known as the electric potential. And what is this? If we talk about the energy, at this point at a distance of r due to this positive charge q, then the potential energy per unit charge, that is the potential energy by charge, that is the potential energy by charge. So when we talk about potential energy by charge, we define a physical quantity that is known as electric potential, potential energy per unit charge. So now write it down. We shall discuss how we are able to find out the value of electric potential due to a point charge first, and then we will apply the concept for the rest of the cases, that is due to distribution of charges, like in the same way that we had all discussed when we were calculating the electric field due to continuous charge distribution. So first write it down, we shall discuss something different. Fine. V equals to what? U by Q. Then unit of V means V is denoted by electric potential. Is volt. What is this volt? If we see volt, that is joule per coulomb. So volt we can write joule per coulomb. And now here we have to discuss in something different thing. When we talk about the potential, what we write? It characteristics of the electric field. An electric field can be characterized by the potential at that point also. So when we define electric field, how do we define electric field? E equals to force per unit charge, that is Newton, force per unit charge, that is Newton per coulomb. So how we should write Newton per coulomb, sorry, here it is coulomb. What we can write? Newton by coulomb. From there you can see that V equals to what? J by C. So here we can write V into C equals to G, 1 unit actually. So what we should write? Ki volt into coulomb by joule, that is equal to 1. Volt into coulomb equal to joule,
and now we can write joule by Newton into meter. Work done. Work is what? Force into displacement. So joule Newton into meter. So we can write J by Newton meter equal to 1. So what? C will get cancelled, Newton will get cancelled, J will get cancelled, that is E, unit of E. So here we can write E equals to V by M, means volt per meter. Volt per meter. This is another unit of electric field, and we can derive in the same way. That's why we can write here an electric field meaning that an electric field can be characterized by electric potential. So what is electric field? Another unit of electric field is volt per meter. That is also the value of electric field. So write it down. We will calculate the. So now we can write कि electric potential is energy, is potential energy actually. Potential energy per unit charge. Which is, that is V equals to U by Q, and this is independent of charge. Unit length, that quantity is not dependent on charge, means energy per unit charge. For unit charge, if energy of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19, that is related to 1 coulomb, then 2 coulomb. For 2 coulomb, just multiply by 2. For 4 coulomb, multiply by 4. And for 5 coulomb, multiply by 5. We need to say कि अगर ये हम इसको डिफाइन करते हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो एक क्वांटिटी मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो क्वांटिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यह चार्ज पर यूनिट की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? चार्ज पर यूनिट की. अब जो दूसरा क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं 1 EV. इसको क्या पढ़ते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the energy experienced by an electron in electric potential of 1 volt. In electric potential of 1 volt. That is, we can write here the energy of 1 electron in potential of 1 volt. That is, we can write 1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1 V. That is 1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Minus 19 joule. So 1 electron volt, this is another unit. We define 1 electron volt. We define electric field Newton per meter. We define 1 electron volt also. So now
इफ अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं इस चीज को फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरेक्टराइज करने का एक तरीका है। जिस तरीका को हम लोगों ने डिस्कस किया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से डिनोट किया। और जब हम यूनिट चार्ज से डिनोट कर रहे हैं उस चीज को, तो मैं इस चीज के लिए क्लियर कट बताना चाहता हूं कि वह चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, दैट इज अ कांस्टेंट। इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी वेरिएबल, बट इट इज टॉकिंग अबाउट per unit charge, anything that is related to unit charge only, right? So we have to discuss the things in the same manner. Now just see, due to a point charge, due to a point charge, सपोज कि एक चार्ज Q R डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ R, आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि इन्फिनिटी को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट की तरह बिहेव करता है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0, राइट। तो एक पॉइंट कोई होगा जो यहाँ पे होगा इन्फिनिटी मतलब v इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इसकी कोई पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है। तो अब यहां से जब इस पार्टिकल को हम लाएंगे, यहां पे जब लाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, सपोज करते हैं Q0 इन्फिनिटी पे है, यहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे। अगर इसको हम इन्फिनिटी से डिनोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब यह पार्टिकल यहां से यहां तक, इन्फिनिटी से यह पोजीशन R तक खुद ब खुद तो आएगा नहीं, खुद ब खुद तो नहीं आएगा। इट कैन नेवर कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय इट्स ओन। सम एक्सटर्नल एजेंट हैज टू वर्क ऑन इट, मीन्स किसी पार्टिकल को आप इस पॉइंट से इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक लाने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस पार्टिकल को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जितना काम किया जाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। So write down here कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the work done by the electric field, by the electric force in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जस्ट सी हियर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की बात होती है
तो इसका मतलब होता है कि इन्फिनिटी से, हमने क्या बताया था कि रेफरेंस पॉइंट है हम लोगों का इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. That is known as electric potential. So just see how we can derive the value of electric potential when we talk about the value bringing. तो सपोज करते हैं कि R है यहां से, तो ये अगर मैं X ले लूं, जस्ट ए मिनट, कि यहां से X डिस्टेंस पे, X डिस्टेंस के बाद एक छोटा सा डिस्टेंस क्या आएगा, dx, राइट, छोटा सा डिस्टेंस क्या आएगा, dx. इसको हम कैसे समझेंगे कि या तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन निकालेंगे इन्फिनिटी टू r, या हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो है वह r टू इन्फिनिटी और उसके नेगेटिव के टर्म में. तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x, फ्रॉम दिस चार्ज q. तो what we should do, let's consider a distance x from a charge q right. So consider a test charge q naught is moved from r to infinity, right. So फोर्स x पे कितना होगा, अगर मैं f की बात करूं तो f कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट at this point x, q naught by x square, right. So वर्क डन की यदि बात करूं, dw, वर्क डन बाई f for dx displacement dw, and dw equals to what, f dot dx. And now see when we talk about f dot dx, the force on this charge particle q naught in this direction, displacement is also in this direction, because this is positive charge, so this positive charge will repel it, so definitely both of them are in same direction. So 1/4 pi epsilon naught q naught by x square into dx, right. So this is the work done. So work done per unit charge. So now change in potential energy, just du equals to what, negative of the work done per unit charge, negative of the work done. So du equals to what, negative of this work done, means du, if we talk about du, that is minus 1/4 pi epsilon naught q into q naught by x square into dx, right. So now if we talk about the potential, that is electric potential energy, it is what, potential energy, and now we want to find out electric potential. So what should we do, electric potential per unit charge, right. So now we shall write
So now we shall write dV. Now potential equal to potential energy per unit charge. So dV, if V is the potential, dV equals to du by q naught. That is, q naught will go away, 1 by 4 pi epsilon naught q by x square into dx. Just see, in this expression here q naught is not present. It means V, if we want to find out V equals to what? Integration of dV equals to what? Integration of 1 by 4 pi epsilon naught q by x square into dx with the negative sign. With the negative sign. Right? That is fine. And now, from where to where? The lower limit is x, upper limit is infinity. So here the limit that we shall put is x to infinity. X to infinity. That is V. So now calculate this. What is the value? V equals to q minus q by 4 pi epsilon naught. It is out of the integration. 1 by x square dx integration. Just write here x. You need not to confuse. So x to infinity. So now x to infinity, what is the integration of 1 by x square minus 1 by x? So V equals to minus q by 4 pi epsilon naught minus 1 by x, and limit is from x to infinity. So put the limit, what we get? V equals to minus q by 4 pi epsilon naught minus 1 by x, that is minus minus plus 1 by x, 1 by infinity minus 1 by x. So it is what? V equals to q by 4 pi epsilon naught, that is V when we calculated it from r to infinity. When we calculated it to r to infinity, q naught with minus sign, I will just write it here. What? Here V equals to minus q by 4 pi epsilon naught 1 by, oh this is r actually, 1 by r. Actually this should be r, lower limit is r and infinity, so this is r our. So now we have calculated what we calculated, कि potential energy per unit charge when the particle is moved from this point to infinity. So now if we calculate what, just see the definition. What is the definition? Electric potential is defined as the work done by the electric force in bringing a unit charge per unit charge from infinity to that point. So work done per, so this is r to infinity. So now work done per unit charge in bringing
from infinity to r, infinity to r is negative of b. So potential at a distance of r is v equals to negative and negative of q by 4 pi epsilon naught 1 by r. So now it has become positive. So v equals to q by 4 pi epsilon naught 1 by r. यहां जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये क्या कंसीडर किए थे कि इस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं r से इंफिनिटी तक, तो r से इंफिनिटी तक जाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, तो इंफिनिटी से r तक आने में उसका निगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, राइट. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ऑफ इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू r. तो यहां पे हम लोग क्या किए कि v इंफिनिटी टू r इक्वल्स टू माइनस वी आर टू इंफिनिटी, माइनस वी आर टू इंफिनिटी. और इसी कॉन्सेप्ट को जस्ट यहां अप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे? पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट. सो अब यहां पे v इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r का वैल्यू हम लोगों ने निकाला. कब? जबकि हम लोग इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में निकाले हैं. तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वी डेफिनेटली टॉक अबाउट द पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू द पॉइंट एट इंफिनिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल, वी टॉक अबाउट द रेफरेंस पॉइंट एट infinity, right? So we conclude this class here, and in the next class we shall derive some more equations of electric potential, where we shall be dealing with some continuous charge distribution, and we shall also see some relations of electric field and potential. So just recalling all these things, what we can conclude from here ki potential energy per unit charge is a unique quantity, that is potential. Potential energy per unit charge is the potential, and the potential is independent of the charge, because it is potential energy per unit charge. It is to characterize the electric field, we have some other quantity, we have a new quantity, that is electric potential. Mathematically, how we define electric potential? Electric potential is defined as the work done by the electric field, in bringing a unit charge from infinity to that point, So thank you very much. Enjoy the lecture, stay at home, study hard, be safe. Thank you very much.